नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। वंदे नमस्कार सर, नमस्कार, वंदे मातरम। और हम दोनों हैं यानी एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी और मैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ में हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, यस, महाराष्ट्र में अब राजनीति बहुत गर्मा रही है और एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट के बाद तीसरा, मतलब भाई अजीबोगरीब मसला हो रहा है कि हो क्या रहा है। पहले त्र्यंबकेश्वर का इंसिडेंट, उसके बाद तुलजा भवानी का इंसिडेंट, उसके बाद कुछ और मैंने सुना है वो राम चौक के ऊपर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। What do you think is going on? Do you think people want a communal right over here? What is the attempt over here to cause communal tension? What seems to be that the tension seems to be coming, and all political parties have been speaking on that particular too. आज राज ठाकरे जी भी बोलने लगे कि त्र्यंबकेश्वर में अगर if these things have been happening since ages, let it happen. There should not be any outside interference. Yes. Now everybody, Mr. Narayan Rane is speaking on that, Raj Thakre is speaking on that, Sanjay Raut already speaking on that. So we are seeing this whole stage set to increase tensions, and if there's increased tensions, God knows who's going to win. And not just a question of winning, it's also a question of the fact that it's going to be bad for Maharashtra. महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की कम्युनल टेंशन पहले कभी देखी नहीं गई है। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आई मस्ट कंग्रेचुलेट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ही हैज हैंडल्ड द सिचुएशन प्रीटी वेल। ही इज द होम मिनिस्टर आफ्टर ऑल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक चीज करी है। लेट्स आस्क आवर फ्रेंड मिस्टर मकरन नार्वेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। नार्वेकर साहब नमस्कार। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। He grows younger by the day. Look at him, oh God. He grows younger by. Have you lost weight? I think you've lost weight. Have you been exercising? Looks like it. You look at least 15 years younger from the time that I saw you last. Or maybe I look 150 years older, perhaps. My routine is to go have a spa treatment before I attend your show. Wonderful, absolutely wonderful. But we see you working very hard in your constituency also. Yes. Very, very hard, extremely That's hard. right. Absolutely. Your promise is to come to visit my constituency soon. When do we come? Let's fix it up right now. I will certainly take you up on that offer closer to time. That's a legal. We shall legal way of saying you don't come. Yeah. We shall keep coming, but sometime next week, if we could have a visit over there to your constituency, It'll be my pleasure. It'll be my pleasure. If you could give us a cup of coffee, that'd be very nice, of course. But नार्वेकर साहब ये बताएं कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद ये अभी त्र्यंबकेश्वर में ये मसला हो गया, फिर उसके बाद तुलजा भवानी के अंदर और रूमर फैल गया, उसके बाद अभी कहीं वो राम चौक के ऊपर कुछ और इंसिडेंट हुआ। What is going on? Why is this going on? I don't understand, Mr. Narvekar. See, I personally think I at the outset I must commend, and it is absolutely the way the Deputy CM has handled the issue. It is commendable. Yes, I agree with you. Yes. And SIT probe immediately jari karna, because if you see, there's a consistent effort by some miscreants to create a disharmony among religious sentiments in Maharashtra. And this time, the more you're getting to see the effect of it as elections come close by. Yes. And it is not, I don't look at it or I don't attribute it just as a mere incident that has happened and it should be taken lightly. For the simple reason, agar aap dekhenge, to it looks like a concerted effort by someone. Whether it is an organization, whether it is politically motivated, but all these things need to be definitely looked deeper into. And it is I think, which is why it is commendable that the way the Deputy CM has handled the issue. The other thing that I look at very, very, take note of is that अगर आप देखेंगे पालघर का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी, जी, those people were also त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कनेक्टेड लोग थे, जी, साधु थे, जी. So and today then there's this what happened in Trimbakeshwar. Then what you're seeing right now, last couple of days, that so I think this is it has to be nipped in the bud. जिसकी भी ये साजिश है, जिसका भी षड्यंत्र है,
कि political disharmony हो या social disharmony हो या probably trying to create riots in Maharashtra. So this has to be nipped in the bud, and I think the present government is doing absolutely right in the way they are But handling who do this. you think whom do you think would be doing that? Because I don't think people from within Maharashtra would ever want anything like this to happen. यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब हजारों सालों से मतलब कितने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं मतलब they would be the last guys ever to think of any communal tension because obviously these are outsiders. Who do you think these guys are? As a lawyer, I think this is absolutely an act of terrorism. Yes. And अगर आप मुझे पूछे तो it is of course I being a believer in our statute, I think जो भी सच है वो लोगों के सामने जरूर आएगा. बट इसका जो आज टाइमिंग है अगर आप देखेंगे the more important what one should note is the timing of this and the intensity and the frequency at which these things are happening, Yes. playing with the religious sentiments of the people, and so all this is culminating closer as the elections come closer and closer. So आज terrorism का this is an act of terrorism. I don't have any doubts about that. आज अगर आप देखेंगे तो इसमें definitely आज there are earlier also there have been people who have been linked to terrorists. There have been all this I think ये जो act of clean up जो आप देख रहे हैं आज which our honorable deputy CM, our honorable CM have taken it upon themselves. I think it is something that the people. Now over here, Mr. Narvekar, I would like to ask you one thing. You've been in Maharashtra all your life. You Right. were probably born over here. Pradeep has been here all his life. I came here in 1993. सर मैंने त्र्यंबकेश्वर में ये चादर चढ़ाना या संदल अंदर लेके जाना मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं सुना. Very frankly speaking, my fault. I should have heard of it. Just because I am ignorant of it doesn't mean that the tradition did not exist. Perhaps it did. I have no idea. But I do know for a fact कि ज्योतिर्लिंग जहां पर है वहां पर संदल या चादर कभी नहीं चढ़ती है. लेट्स बी वेरी क्लियर. नंबर 1. नंबर 2, जो वहां के लोग हैं जो हम लोगों की उनसे बात हुई है उन्होंने कहा कि भाई जो नॉर्थ गेट है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उसके सामने से कोई 100 या 150 गज दूर लोग जो हैं वो पीर साहब की कोई चादर है या संदल है वो लेकर के जाते थे, ऐसे करके दिखाते थे और चले जाते थे. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंदर घुसने की कोशिश की गई है. Why do you think that has happened? What could have prompted this? You're absolutely right. You're absolutely right about the fact that there's not an iota of doubt that this is not जो पारंपरिक एक रिचुअल्स है वो ये है नहीं. ये तो सबने माना है क्योंकि वहां पे एंड विच इज व्हाई आई थिंक ये जो पॉलिटिसाइज करने की जो षड्यंत्र है. It is a heinous act, whoever has done it. It is a heinous act to invoke people's sentiments so that which further leads to terror, riots. So I think it has to be looked upon in the strictest way possible. So आज अगर आप देखेंगे तो ये there is not an iota of doubt that this is not a ritual or it's not a practice. And given that as it is, I think it is definitely it has to be looked into. The people whoever has whether it is, and however deep rooted one has to go in this. Narvekar Sahab, even Raj Thackeray today has raised this particular issue. He says if the traditions are on, outsiders should not go and provoke the situation to unmanageable limits. Now he says. I'll tell you one thing. Yes. Let And he says the Marathi Muslims will never indulge in any kind of these activities because Marathi Muslims have stayed in Maharashtra, they know the culture, they have gelled with Maharashtra culture. So this can't be Marathi Muslims. How do you see, sir? You were saying something. See, this is definitely not a Hindu-Muslim issue. It is definitely not an issue where the locals are trying to do something which is against the Hindu rituals and practice or tradition. It is definitely an act of terrorism where people are involved, where concerted efforts are being made to create disharmony amongst the locals over there. Ultimately, the brunt of this is going to be first felt, or I hope not. But if it has happened or started there, then why I don't see any reason why the locals would want to indulge into something like this.
So it is definitely something which has been planted, which has been implanted for whatever gains, whether it is political, whether it's whatever. So Or is it a yes, land grab? I tell you what, Narvika Saab, just the other day we had a gentleman from the Vishwa Hindu Parishad, and he was absolutely sure that this is a land grab attempt by possibly some jihadi elements, because they've seen how the Waqf board, especially in Karnataka, in Kerala and elsewhere, they've grabbed villages after villages, even where there have been ancient Hindu temples recognized as such even by the Archaeological Survey of India, and now they are part of the Waqf land. That's what he said. Could that be a possibility? I mean, you're a lawyer. absolutely. I think one of the theories that have come in the forefront is a theory where terrorists are looking at, or outfits that are linked to terrorism are looking at land grab. So I think it is definitely, it cannot be ruled out at all, and which is why I think an investigation at the highest level to bring out the facts has to be made. So I think the timing, as I told you, has to also is also crucial, and one needs to take notice of that. Daruka So I Saab, think- Sanjay Raut says that why SIT only for this particular issue, Trimbakeshwar issue? Why there was no SIT where Ram Navami issue? He says Devendra Fadnavis ji is playing politics. He knows exactly what's happening. In fact, Sanjay Raut says there's a tradition. Jitendra Awad says there's a tradition. Case has been filed, FIR has been filed, and also an SIT has been instituted. Now, how does this political atmosphere is being vitiated? Sanjay Rao saying something, Jitendra Awad in fact getting that particular persons in his press conference and allowing them to speak. So, is the opposition and the state not on same plank? They are talking differently. See, Sanjay Raut speaking, I don't think, as I have always told you, there is absolute disconnect between the brain and the tongue, as far as what Sanjay Raut says. So, it is unfortunate that someone like Sanjay Raut, for him to look at it from that perspective, because if, unfortunately, and for due to absolute mismanagement, आपने देखा कि पालघर के उस साधुओं को क्या पालघर में उस साधुओं का क्या हशर हुआ था, और जिसके बाद क्या रिएक्शन था. Only after there was a considerable pressure from the people was some consolence order action taken. So it is paying much heed to what someone like Sanjay Raut says is I don't think is mandated. But and as far as Jitendra Awad goes, I think he stands no moral ground. जिनके जिस पार्टी से है, जिस पार्टी के लोगों को who are linked to people like Dawood. So I think there is no moral ground for these people. I think it is absolutely in the interest of the people that the action that has been taken by the government, the deputy CM, the CM, and the truth must prevail. The truth must come out. Why this is happening consistently, and why, especially now as the elections are coming close. And so this is something that needs to, for the people of Maharashtra need to know. But Mr. Narvika, just a small thing, because you mentioned that Mr. Awad comes from a party, some of whose people have been linked to Dawood. I assume you mean Mr. Nawab Malik? Is that what you're talking about? He's in jail right now? Absolutely. Right. Now the point is, in the case of Mr. Sameer Wankhede, 90% of the press, 95% of the press is again and again trying to say that Nawab Malik was right. Even without the courts having reached a decision, even without a proper investigation having taken place, an officer like Sameer Wankhede, irrespective of whatever, I don't know what the decision the courts are going to come to or whatever result they're going to arrive at, who had more or less cleaned up Mumbai from all kinds of drugs, is today being accused of all sorts of things, and people are again and again pointing to what Nawab Malik said. Don't you think there's a discrepancy here? Let me tell you. Let me answer that in two parts. One is, today I would not go into the merits of what has the action that has been is being taken against an officer like Sameer Wankhede, because that is for the courts, that is for the investigating agencies right. to come out
come out with the and the courts to decide. Let's be very and the clear. courts to decide. Yes. So I will not. But what I would definitely take notice of is the fact that when after this whole episode that Samir Wankhede brought out about the drugs, there was definitely, which statistics show that there was a dip in the crime related to drugs Yes. and narcotic substances. So we are right here in Kurla. We can tell you कि जैसे दहशत होती है ना किसी की, समीर वानखेड़े के नाम से दहशत थी जितने भी यहाँ पे ड्रग डीलर्स और ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज की तारीख में it seems to be open season. It's like, big deal. It's back to normal. Very frankly speaking, the entire drug business is right back to where it used to be. Yeah, in fact, eliminated nearly 14 top gangs who were, Yes. the kinds of People that cryptocurrency, used to, the dark web, Yes. all kind of things where people could not trace it out, and you should give them the credit for doing that. And now it's very sorry to see that such officers are facing the entire Author Road jail was filled with drug mafia peddlers, and drug peddlers. distributors and gangsters, all thanks to Samir Wankhede. I'm not sure what is going on here. Do you know what's going on here, Mr. Narvekar? So coming back to this, I think, as I said, that definitely the courts will decide and the investigating agencies will come out with what the facts are or what the truth is. But the fact remains that what Nawab Malik said was right or was wrong. I don't think that is what is is important. The fact remains that a person like Nawab Malik is yet till today behind bars. I think that is victory of our judicial system, victory of our And most importantly, sir, Nawab Malik is inside because of his relationship with Dawood Ibrahim. Absolutely. Because of the fact that he did business with Dawood Ibrahim's people over here in Mumbai and was able to grab land worth God knows how many hundreds of crores for peanuts, because he was able to bring in a lot of pressure because of the Dawood gang. That is the allegation against him. It has nothing to do with what he said about Mr. Samir Wankhede. Now it is being made out as if he is in jail because of Samir Wankhede, which is utter nonsense, because the two cases are completely different. Completely, absolutely. The two cases are totally different, and giving credentials to someone who is inside the prison Yes. because of having links to Dawood Ibrahim, I Yes. think that is absurd. So I don't think that is any of his business. And So what's wrong with these guys? What's wrong with the reporters right now? Listen, I may be sounding like a crotchety old man. I've been a journalist for 42 years. I understand. Everybody can turn around that RKB is a grandfather. Let him say whatever. But all I'm saying is, how can you compare the two cases? They're completely different. But the fact remains that today, जैसे बोलते थे कि बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आएगा, जी. वैसी सिचुएशन बंबई में थी जब समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के से निगड़ित जितने भी लोग थे उन्हें, फिर वो किसी भी हैसियत के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी सोशल स्ट्रेटा के हो, उन्हें आज एटलीस्ट एक खौफ लोगों के मन में पैदा हुआ था कि आज कितना भी बड़ा बच्चा हो, कितने भी बड़े बाप का बच्चा हो, उसे अंदर जा सकता है अगर उसने कुछ गलत किया तो ये जो भावना थी, जो लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ था, और जिस शख्स ने ये किया था, because of whom it is statistics show that crime related to drugs had come down drastically. Yes. I think it is time will tell, and the truth will prevail. That's what right. I would Absolutely. So what I'm saying is, coming back to the subject at hand, what we started off with, you look at Triambakeshwar, then you look at the rumor with regard to Tulsa Bhavani. Somebody said a hammer had been taken in some, and the statue itself, the idol itself had been damaged, and somebody threw an egg at a Ram idol or something like that. That again came out today. All I'm saying is, what's going on? Why would such a thing be going on right now, Mr. Narvekar? What do you think is happening? I think this is all a concerted effort, and politically अगर motivated अगर हो तो इसकी छानबीन
सबसे most at the highest level it should be done, because this and all this culminating towards close to the forthcoming elections. Yes. I think there is definitely political एक angle भी rule out नहीं कर सकते, because this is and of course when one must also look at the terrorist connections of those people who are behind all doing all this. Yes. आज Hinduism, if you see, is extremely बहुत ही एक well encompassing and शांत स्वभाव का religion है. आज अगर आप देखेंगे तो लोगों की भावना अगर किसी चीज से ठेस पहुंच रही है, and if that can lead to something totally catastrophic, I think it is just that it has to be nipped in the bud. And I think I give full credit to our Honorable Deputy CM, the way he has handled this situation. Narvekar sahab, JP Nadda ji was here. JP Nadda sahab bole ki Mumbai is going to have a BJP mayor. And that said, whole motion of politics out here. Sanjay Raut saying that he doesn't know, Mr. JP Nadda doesn't know Mumbai, he doesn't know Maharashtra. Then, the MVA vote share, they say, is more than 50%. We fight together. BJP can never win. But then there's again contradictions within the MVA, where Sanjay Raut says we are going to fight all the 6 seats. Then, Congress, Nana Patel is saying, no, we have not decided. Then ultimately Sharad Pawar saying. So, do you find a united MVA where BMC is concerned? And how do you vouch Mr. JP Nadda's statement that BJP mayor will be there for BMC? Yes, sir. I think there are two major issues that one has to look at when they are talking about MVA. One is unity amongst the three miscreants, and not only the unity amongst the three parties, but also unity within the parties, in that whether it's Congress, whether it's NCP, and whether it's the UDDHAV THACKERAY-SHARAD. And in the past few days, one has got to see umpteen incidences which bring out the kind of healthy relations that MBA, these three are having in MBA. So given that as it is, the way I look at it, that it is a given that today Mumbaikars are wanting a change. Sharad Pawar ji ne kal statement kiya tha ki change is inevitable. I think he is absolutely right. Change is inevitable. 30 साल का mismanagement, corruption, lakhs of rupees of Mumbaikars have gone down the drain. आज अगर आप नाले सफाई, monsoons are nearing. आज if you look at नाले सफाई, ब्रिमस्टोवर्ट का क्या इतने सालों में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए वो ब्रिमस्टोवर्ट के नाले सफाई में डाले. आज उसका नतीजा क्या है? अपने नाले they are as it is. There is absolutely not a खाली ट्रक का बिलिंग हुआ करता था. I believe the money from the World Bank is still lying in the bank. Absolutely. Yes, it's not been used as yet. So Brimstone is Brihan Mumbai's stormwater drain project. It is still lying over there. I mean, it's a 20-year-old project. It's still lying there. Project which it was a milking cow. Yes. For Uddhav Thackeray-Sena. So Yes. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हर साल एम्प्टी ट्रक्स, गार्बेज भरे, डेब्री भरे हुए ट्रक्स को बताया जाता था कि उन्होंने वो नाले में से सफाई की है. उनके चालान बनाए जाते थे, उनके पैसे दिए जाते थे. ऐसे करके इन्होंने सालों से मुंबई को और मुंबई करों को जिस तरीके से लूटा है, I think change, he is absolutely right that change is inevitable. And this is not just corruption at the most downgrade level that we are seeing, but that it is in every bit. आज मुंबई की जो हालत की है, मैं समझता हूँ कि आज ये MBA साथ में लड़े नहीं लड़े, that apart, I think Mumbaikars are absolutely ready to show Uddhav Thackeray-Sena its place. And I've also heard, by the way, I'm not sure whether this is true or not. When Mr. JP Nadda was here, he discussed quite a few things with the leadership. Among them was that BJP leaders must reach right down to the village level. That is, all BJP workers must have a personal contact program with everybody, and every village in Maharashtra must have a contact point. Is that true, sir? Because that will be a huge thing.
See, today BJP as a party is extremely organized, and I think it is not only because it is the largest party, but I would say that it is one party which is connected in multiple ways with with the grassroots level people. So I think it is definitely आज it is एक परिस्थिति है कि आज as a party BJP is connected with the tier from the bottom to the top of the rank, and second is the outreach that the party has had through various programs, through various जो लाभार्थी है जिन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम्स जो दिए थे, वेदर इट वाज फॉर द लेट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए, तो उनके ये जो लाभार्थी है they are in crores. So I think people have benefited. Those who have benefited can never forget the benefits that they have received from an organization. So I think it is one of the few parties which जो जिनकी नाल सबसे लोएस्ट रंग से जुड़ी है. Sir, Narwekar Sahab, are you saying the redefined Rahul Gandhi that you call Pappoon, he has become an invincible, confident, unstoppable Rahul Gandhi who fought money bags, who defeated crony capitalism, bought bought Congress to Karnataka, and you find the future PM in 2024, Mr. Rahul Gandhi. How do you see it, sir? The redefined. I think I won't be surprised if I see him wearing a costume, next. So it is if anyone feels that it is reloaded Rahul Gandhi, I wish good luck to them. But I think people are forgetting that आज when we are talking about whatever reason Rahul Gandhi should feel the way he may feel, आज अगर आप देखेंगे तो लोगों की जो मानसिकता है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो भरोसा है डेवलपमेंट के ऊपर, that we have been a starking example, a fine example of that is what we have, the results that we have seen in Uttar Pradesh. जहाँ तो I think जहाँ पे 17 मेयर्स चुन के आते हैं एक पॉलिटिकल बीजेपी के, so I think it is a direction, it is that we can get to see for the days to come. Right, and Chaldrade sir, just one small little thing. I don't know. I would like to know your opinion about this. Just an opinion, in case you want to express an opinion. The Supreme Court's constitutional bench passed an order on the separation of powers between the Lieutenant Governor and the elected government of Delhi just the other day. That seems to have been overturned by a GR or an ordinance which was issued by the cabinet yesterday, central cabinet. Now, would you regard this as contempt of court, or do you think it is in, the course of things? I'm talking about Delhi. Mr. Narwekar, can you hear me? Sorry, there was a disconnect. I'm sorry. I am asking about, just the other day, the constitutional bench of the Supreme Court gave a judgment on the separation of powers between the elected government in Delhi and the Lieutenant Governor. Yesterday, the government of India, through a cabinet resolution, passed an ordinance effectively overturning that Supreme Court order. Do you think that qualifies as contempt of court, or do you think that is in the routine of things? No, I don't think that is in the contempt of court, and I think it is absolutely within the realm of the duties of the center. And if the center and which it has made any laws, I think it is the Supreme Court. Ultimately, the courts have to work within the framework of laws. And if a law is mandated for the betterment of the country, I think absolutely it's welcome by the citizens of this country. Right. I won't press you very much further on this, because that will be a subject that will be decided, I think, when
the courts come back after the vacation. But all the same, thank you very much for talking to us. And yes, indeed, we agree with you that Mr. FADNAVIS has so far done a wonderful job, especially with regard to controlling these communal incidents, at least 4 of them that we are aware of, that have come in one after the other. Thank you very much, Mr. Thank you. Narvekar. Wonderful talking to you. And your constituency, sir, next week, I hope. Next you should week, be there. next week coffee. Wonderful, sir. Namaskar, you. sir. Namaskar and Vande Mataram. Thank you very much for joining us. Vande Mataram, sir. Right, so very confident, Mr. Narvekar, as usual. भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है साहब, भले कर्नाटक जीतो या कहीं पर हारो या जीतो, कॉन्फिडेंट हमेशा रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र कांग्रेस के अरशद आजमी साहब। आजमी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार आजमी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। मुबारक हो। नमस्कार। कर्नाटक में स्वेरिंग इन भी हो गई, मंत्रीगण भी बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त जीत होगी। अब ये कांग्रेस की जो कर्नाटक में जीत हुई है, क्या ये भारत के अलग अलग राज्यों में भी होगी? अरशद आजमी साहब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में भी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी इसी तरह कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और कांग्रेस पार्टी की जीत इसलिए भी होगी चूंकि पिछले जहां पर भी इस तरह भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से जहां हुकूमतें रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो आर्थिक या सामाजिक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर चूंकि वो पूरी तरह नाकाम रही है और उसको उस नाकामी को छुपाने के लिए उसने जिस तरह सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया इस मुल्क के अंदर, तो निश्चित तौर से लोग आवाम जो है, देश के लोग जो हैं, अब इन तमाम बातों से पूरी तरह से ऊब चुके हैं जी, और वो अब इस पे बदलाव लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जी, जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। जी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार थी, उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई। लेकिन इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान, जिसका रिकॉर्ड रहा है कि बार बार हर 5 साल के बाद वो सरकार बदलते हैं, इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस वो परंपरा को तोड़ने में सफल होगी। अरशद आजमी साहब। देश में देखिए साहब, देश में ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां हर बार जहां देखा ये गया है बार बार कि 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। तो इस तरह की रिवायत रही है देश में, पर अगर कुछ राज्यों की तरफ अब ध्यान ले जाएंगे तो ऐसी रिवायतें टूटी भी हैं। और इस बार राजस्थान में चूंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया है, और आगे भी आने वाले वक्त में जिस तरह के घोषणाएं और जिस तरह के वादे सरकार लोगों से कर रही है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से काम हुआ है, तो इस बात की पूरी तरह से उम्मीद है कि राजस्थान में कांग्रेस दोबारा जीत के आएगी। और जैसी जो स्थिति है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, इस तरह से उनके ही पार्टी में जिस तरह से पिछले दिनों में जो पूरे देश के अंदर जिस तरह की स्कीमें और जिस तरह के हालात पैदा किए गए, तो बहुत राजस्थान के लोग भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें दोबारा 5 साल के बाद सरकार बदलने की रिवायत पर अगर सत्ता में ले आए तो वो राजस्थान के लिए कुछ भला कर सकेंगे। ऐसी वहां के लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं है। अर्जुन साहब, आजमी साहब, जो राजस्थान मॉडल था गहलोत साहब का, जो एक जबरदस्त मॉडल था, उन्होंने कहा कि गैस 500 रुपए में देंगे, 100 यूनिट फ्री दे देंगे, 2000 यूनिट फार्मर्स को फ्री दे देंगे, 25 लाख मेडिकल इंश्योरेंस हिसाब से गरीबों के लिए, लेडीज वुमन ट्रैवल है 50% डिस्काउंट उसके ऊपर, 1000 या 30,000 स्कूटी बच्चों जो महिला बच्चे जो छोटे छोटे बच्ची हैं उनको बांटेंगे, 3000। तो ये इंग्लिश स्कूल 1000 यूनिट, तो ये एक जबरदस्त मॉडल, इसी प्रकार के मॉडल आपने कर्नाटका में भी इंपोज कर दिया एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। और मेन चीज क्या है, जो प्रधानमंत्री जो हमेशा पार्लियामेंट में छादित होकर बोलते थे कि मैं इतने गरीब कल्याण योजना, तो उनके सब योजना जो है 11 करोड़ टॉयलेट देना, 3 करोड़ घर देना, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि नल से जल 12 करोड़ घर में हमने कर दिया।
तो ये क्या चीज है कि मोदी जी को रिजेक्ट करके राहुल गांधी जी, गहलोत जी के और कर्नाटका में जो आपके प्रोपोजल को लोग ने अपनाया, ये क्या हुआ चमत्कार? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो दो चीजों के ऊपर काम किया गया है, पहला तो एक नोटबंदी और दूसरा जीएसटी को गलत ढंग से जो उन्होंने लागू किया है। इन दो फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति को एकदम तहस नहस कर दिया। ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो कल तक रोजगार किया करते थे और रोजगार, अच्छा खासा रोजगार करके अपना परिवार चलाने के लिए वो सक्षम हुआ करते थे, इन दो नीतियों ने देश में लाखों लोगों की कमर को तोड़ दिया। वो आर्थिक तौर से जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इसी और उन्हीं सब कारणों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने जो आज ये अलग अलग जो बेनिफिट्स आवाम को देने की बात की है, क्योंकि आज अगर आवाम को इस तरह के साथ सरकारें नहीं खड़ी होंगी तो वो लोग दोबारा अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे, और अगर वो दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे तो फिर राज्य का विकास कैसा? तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए जो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद जैसे कि कोरोना भी आ गया, तो उसके बाद जो आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लोगों को एक सपोर्ट करने की जरूरत है, जो कांग्रेस पार्टी देश के हर राज्य में जहां जहां चुनाव है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी कर रही है ताकि लोगों को सपोर्ट देकर खड़ा किया जा सके। और एक दूसरी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस देश में काम कर रही है, तकरीबन आपको हैरत होगी इस बात को कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 623 योजनाओं का ऐलान किया है। 623 योजनाएं इस देश में चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं इस देश में चली जिसपे लाखों करोड़ों रुपयों का फंड उसमें रखा गया। लेकिन आज 9 साल के बाद जब आप उन योजनाओं का हश्र देखते हैं तो नतीजा आपके सामने जीरो आता है। ये अब तक बहुत सारे स्कैंडल इस देश में होते आए हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो शायद इससे बड़ा स्कैंडल आपको नहीं दिखाई देगा कि वो लाखों करोड़ रुपए जो इन योजनाओं के नाम पर खर्च किए गए और उसका नतीजा जीरो आया, तो फिर आखिर वो लाखों करोड़ रुपए गए कहां? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और आप इस उदाहरण से ये भी देखिए कि क्या इससे किसी का भला हो सकता है। मुद्रा योजना का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया, अब तक करोड़ों रुपए मुद्रा योजना के तहत बांट दिए गए, लेकिन आप उसमें जितने लोग उससे लाभार्थी हुए, जितने लोगों को मुद्रा योजना से फायदा हुआ, अगर आप एवरेज निकालेंगे कि एक व्यक्ति को टोटल मुद्रा योजना के लाखों करोड़ रुपयों में से कितना पैसा मिला, तो वो एवरेज 56,000 रुपया आता है। यानी मुद्रा योजना के तहत एक व्यक्ति को 56,000 रुपया रोजगार के लिए मिला। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या 56,000 रुपए से इस देश में कोई ऐसा रोजगार शुरू किया जा सकता है जो उस व्यक्ति को तरक्की की राह पर आगे ले जा सके? अभी आवास योजना का आपने बहुत ढिंडोरा सुना होगा प्रधानमंत्री की तरफ से। ये 1985 से आवास योजना इस देश में चली आ रही है, और पिछले प्रधानमंत्रियों की रफ्तार से अगर इसकी डिटेल में आप चले जाएंगे तो आवास योजना में पिछले प्रधानमंत्रियों की रफ्तार के मुकाबले नरेंद्र मोदी जी की जो रफ्तार है वो 10% कम है। कितने लोगों को उन्होंने कहा था 2022 में सबको मकान मिल जाएगा, 2024 आने का वक्त आ गया, इलेक्शन आने का वक्त आ गया, अब मुश्किल से उसमें अगर आप पता लगाएंगे तो कितने करोड़ का ऐलान किया था, उसमें 2-5-10% लोगों को ही मकान मिला। तो ये जो अलग अलग स्कीमों को लाकर ये लूटा गया उनका पैसा। नमामि गंगे का कितना शोर उठा था, गंगा की सफाई, करोड़ों रुपए रखे गए थे गंगा की सफाई पर कि इसके गंगा का स्वच्छ होगी, साफ होगी। स्वच्छ भारत अभियान, उस पर करोड़ों रुपए रखे गए थे। आखिर वो तमाम पैसे, वो तमाम फंड जो इन योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए रखे गए थे, वो तमाम के तमाम पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन इन योजनाओं का निकला क्या? गंगा साफ नहीं हुई अभी तक। एक बड़ा वादा था प्रधानमंत्री का इस देश के लोगों के साथ, क्योंकि वो धार्मिक तौर से लोगों को बेवकूफ बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो एक नमामि गंगे का एक बहुत बड़ा नारा था, लेकिन आप जाकर देखिए आज गंगा की क्या हालत है। तो ये तमाम योजनाएं जो इस तरह की सरकार ने इस देश में लाई और उसका पैसा लोगों ने लूटा जिस तरीके से,
तो उसके उसके बदले में आज देश के लोगों की ज्यादातर हालत ये हो गई कि वो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो गए, और फिर ये जरूरी हो गया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश को सालों से इस देश में हुकूमत किया है कांग्रेस पार्टी ने और लोगों के दुख दर्द को समझती है, तो उन सब बातों को नजर में रखकर फिर हर राज्य में इस तरह की स्कीमें बनाई जा रही हैं जिससे एक आम आदमी के साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर अरशद आदमी साहब दूसरी चीज़ है, एक छोटी सी बात है, जैसे इस पर आप क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं है, या मालूम ही है क्या कहेंगे। अभी 2000 के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, 2000 के नोटों को कह दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप लोग बदल दीजिए। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। देखिए साहब, मैंने जैसे अभी और भी बहुत जगहों पर ये बात कही है जी कि सरकार के पास कोई विजन नहीं, कोई ऐसा विजन नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कोई अच्छा विजन होगा तो स्टेप बाय स्टेप आप उन तमाम चीजों के लिए तमाम चीजों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी 2016 में नोटबंदी की गई जी 2016 में नोटबंदी हुई, उसमें लाइनों में खड़े हुए 125 लोग जो है वो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज तक सरकार ने ये बताया कि 2016 की जो नोटबंदी हुई थी या कोई पत्र जारी किया कि 2016 की नोटबंदी के बाद देश को ये फायदे हुए हैं, उसकी वजह से देश में इतनी तरक्की हुई, आर्थिक इतनी तरक्की हुई, और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार था, कालाबाजारी थी, या जो अपना टेररिज्म था उसके ऊपर रोक लग गई। तो वो नोटबंदी भी बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी विजन के की गई थी, और आज ये 2000 के नोट जो बंद हुए, अब ये तो सरकार बताए ना इसमें क्या विजन है, उनका क्या फायदा हो जाएगा इससे, देश को इससे क्या फायदा होने वाला है कि आज आप 5 साल तकरीबन 5-7 साल के बाद, 7 साल बाद आप जो है वो 2000 की नोट बंद कर रहे हैं। एक गैर जरूरी उठाया हुआ कदम, जिसकी कोई दिशा है न, जिसका कोई विजन है न, जिसके बारे में आगे कोई सोचा गया है, उठपटांग कदम जैसा सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह कदम उठाती आई है, वैसे ही एक बेतुका कदम है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस की इतनी भारी भरकम जीत हुई कर्नाटक में, तो शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कांग्रेस के पास 2000 के नोट बहुत हैं, तो उनको डिमोनेटाइज कर दिया जाए। देखिए साहब, कांग्रेस की जो कर्नाटक में जीत हुई है जी, उस जीत को, एक चीज में आपको ये बात को बहुत नजर में रखना पड़ेगा कि एक जो बोझल वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बना दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी विकास का मुखौटा ओढ़े, जो प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास का मुखौटा ओढ़े लोगों के बीच घुमा करते थे, और पीछे से जहर घोलने का काम प्रधानमंत्री की आईटी जो सेल है वो किया करती थी। इन जो सांप्रदायिकता जो देश में फैलाने की कोशिश नहीं बल्कि कामयाब कोशिश हो रही थी, उस पर ब्रेक लगाया है कर्नाटक की आवाम ने। जी कर्नाटक की आवाम ने रोका है उस नफरत की राजनीति को जो इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं की गई। ये देश कौमी यकजहती का देश है जो पूरी दुनिया में अपनी एकता की ही वजह से जाना जाता है। तो उस चीज को ब्रेक लगाया कर्नाटक की आवाम ने। तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की आवाम की एक क्या बोलते हैं उसको, हिकमत अमली थी, एक उसका प्रोग्राम था कि किस तरह से इन पर रोक लगाया जाए। और लोकतंत्र में आवाम ही वो ताकत है जो इन तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें 2000 के नोट का कोई योगदान था। ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक के लोगों की जीत थी, उनका जवाब था भ्रष्टाचार के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ। अरशद आदमी साहब, तो आपको लगता है कि आज तक जो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही है, जैसा कांग्रेस का और अन्य गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने हैं उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति पर जीतती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करा के जीतती है, तो क्या वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम अब खत्म हो गया है या आज भी उसमें काफी दम बचा है? आजमी साहब, देखिए, ऐसा है कि ये हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव हुआ, और हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में एक बड़ा चुनाव, उसके बाद हालांकि गुजरात का भी चुनाव हुआ। तो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, तो कम से कम कर्नाटक के चुनाव को लेकर ये कहा जा सकता है कि वहां पर ये हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, कम से कम कर्नाटक में तो खत्म हुआ। अब रहा देश के बाकी राज्यों में, तो देश के बाकी राज्यों में भी लोगों को ये पैगाम तो गया कि कर्नाटक के अवाम ने किस तरह एकजुट होकर किस तरह भारतीय जनता पार्टी के 80 और 20 के नारे को नकार दिया। 80 और 20 के जो अलगाव भारतीय जनता पार्टी ने देश में कर रखा था, उसे कर्नाटक की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। 80-20 का जो फार्मूला बनाकर लोगों को बांट रखा था, तो कर्नाटक की अवाम ने कम से कम उस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया और वहां पर 80 और 20 एक साथ हो गए, जिस तरह आजादी की लड़ाई में एक साथ थे। तो ये धीरे धीरे देखिए, देश को अब इसकी जरूरत है। देश को ये समझना पड़ेगा कि वो मुखौटा सरकार जो विकास का मुखौटा ओढ़ती है, फिर चुनाव के दौरान वो विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। अगर वो विकास कर रहे हैं, अगर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया गया है, तो फिर इस पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते प्रधानमंत्री जी? अगर प्रधानमंत्री जी 6 घंटे का युद्ध रोककर, यूक्रेन और रूस के बीच 6 घंटे का युद्ध रोककर पूरी दुनिया में सबसे बड़े नेता बन गए हैं, तो फिर इस पर प्रधानमंत्री जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? चुनाव प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों लड़ते हैं कि एक शास्त्री को अपना वो बनाकर पूरे देश में घुमाने की कोशिश हो रही है और सभी लोगों को जो है वो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जा रहा है। इस पर क्यों चुनाव हो रहा है? चुनाव करिए ना। 623 योजनाएं आपने लागू की थी, उस पर चुनाव करिए। आपने तो बहुत विकास किया, आपने रोजगार, युवाओं को आप बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बना दिया। आप बता रहे हैं कि आपने 3 तलाक का कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को के साथ इंसाफ कर दिया। मांगिए ना इस पर वोट। इस पर वोट आप क्यों नहीं मांग रहे? तो यहाँ पर एक चीज बताएं सर, क्यों मांग रहे हैं? जी बोलिए बताइए सर। जी, मैं ये कह रहा था कि इन चीजों पर वोट मांगिए। आप तो वोट धर्म के नाम पर मांग रहे हैं जी। आप ये सोचिए, आश्चर्य हुआ होगा पूरी दुनिया को ये देखकर कि वो हिंदुस्तान जिसमें एक संविधान है और उसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई है, वो सेकुलरिज्म जिसके झंडे तले इस देश के अंदर जितने धर्म हैं वो पूरी आजादी के साथ अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उस भारत देश के अंदर, उस सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री धार्मिक नारा लगाकर वोट मांगता है और देश का इलेक्शन कमीशन मुंह पर ताला लगाए बैठता है। दुरुस्त बात। तो आदमी साहब ये बताएं कि अभी जो त्र्यंबकेश्वर में एक घटना हुई, उसके बाद अभी तुलजा भवानी के ऊपर भी एक रूमर फैला, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या जान करके कुछ दंगा भड़काने की कोई साजिश चल रही है? क्या हो रहा है? देखिए साहब, देश के कोने कोने में इस तरह की कोशिशें बहुत तेजी के साथ की जा रही है। आप ये देखिए, फिल्म अभी जैसे मैं आपकी 1 सेकंड से मैं उस तरफ जाऊंगा। जी बोलिए। देश के कोने कोने में इस तरह की कोशिशें की जा रही है और कोई मीडियम नहीं छोड़ा जा रहा। हर मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है, हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों के बीच लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया जाए। और सबसे आसान टारगेट है इस देश का जो माइनॉरिटी तबका है, वो बहुत आसान टारगेट है। जिस तरह मीडिया के जरिए और जिस तरह आईटी सेल ने पूरे देश में इस देश के मुस्लिमों के खिलाफ एक जो नफरत फैला रखी है, जो तरह तरह के प्रोपेगेंडे, गलत प्रोपेगेंडे कर रखे हैं, तो बहुत आसानी से ये किया जा सकता है, लोगों को भड़काया जा सकता है। जो फिल्म बनाई गई है केरला स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया इस बात का कि आप अपने डिस्क्लेमर में इस बात को लगाइए कि ये 3200 यानी 3200 लड़कियां जो केरला से बाहर गई, सर 32,000 जो लड़कियां केरला से बाहर गई, उसकी कोई हकीकत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया कि आप लगाइए, लेकिन फिल्म को जारी रखा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो। ये मुझे बताइए, वो फिल्म क्या देश में, जब जो चीज सच नहीं है फिर उसके नाम पर नफरत फैलाने की क्या वजह है? तो ये तरह की कोशिश हो रही है, पूरे देश में हो रही है और हर मीडियम से हो रही है। और मुझे ये बात तो देश के उस अक्सरियती तबके को, मेजॉरिटी का जो तबका है, उसे समझना पड़ेगा कि इस देश का मुद्दा ये नहीं है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये देश का मुद्दा ये नहीं है कि एक फिल्म झूठ बोलकर क्या कहती है। ये देश का मुद्दा ये है कि आने वाले दिनों में देश विकास कैसे करेगा। आजमी साहब, जिस प्रकार से आप देखोगे, यानी राहुल गांधी जी की
मोहब्बत की दुकान मोहम्मद हर जगह। है ना, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग, जैसे देव फडणवीस जी कहता कि एसआईटी होगा, त्र्यंबकेश्वर इंसिडेंट में एफआईआर भी रजिस्टर हो गया। हमारे राउत साहब बोले कि, संजय राउत साहब बोले कि यहाँ पर एसआईटी क्यों, और अलग अलग रामनवमी वाले इंसिडेंट में एसआईटी क्यों नहीं। देन वी हैव राज ठाकरे जी आज बोल रहे हैं कि देखो जो मराठी मुसलमान है बहुत शांतिपूर्ण आदमी है, वो उनसे ये सब होगा नहीं, और ट्रेडिशन अगर है तो बाहर के लोग आके उस ट्रेडिशन को विशेष न करे, रॉयड की तरफ बढ़े नहीं। तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचार, आपका नेटवर्किंग जबरदस्त है आजमी साहब, यू गॉट अ वेरी फैंटास्टिक नेटवर्क, कम्युनिटी में भी है और कांग्रेस और अलग अलग। तो इस चीज को कैसे देखते हो, त्र्यंबकेश में हुआ क्या ट्रेडिशन था, नहीं था, ये क्या हुआ सर? देखिए साहब, मैं उसके बारे में, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा उसमें जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं बहुत खुलकर उस पर तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि मतलब आज जिस तरह से बातों को कोई भी छोटी सी बात अगर कहीं से निकलती है तो कम से कम उन तमाम व्यक्तियों को, चाहे वो कानून के लोग हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे जो ये पॉलिटिकल नेता हों, इन तमाम लोगों को इस बात को सोचकर ही कोई बयान देना चाहिए, बगैर किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के अवाम के लिए और अपने राज्य के लिए बयान देना चाहिए कि इससे अवाम का या राज्य का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि तमाम के तमाम लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को देखकर काम कर रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि एक विशेष समुदाय के लिए अगर कुछ बोल दिया जाए या एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो इसका उनको फायदा हो जाएगा, वो उसी तरह से बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में एक अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों की बात को सुनने को वो कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन आजमी साहब ये बताएं, इसका मतलब ये हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वेरी फ्रेंकली, कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका प्रभाव हमें देखने को मिला कर्नाटक में। 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जिसमें से 30 में आप लोग जीते हैं, 30 में कांग्रेस जीती है, 30 आउट ऑफ 34। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके 30 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। 30 candidates of the BJP have lost their deposit in Karnataka and that was the ruling party in Karnataka. अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन, पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर के सीधा गुजरात तक जाएगी। क्या ये वजह तो नहीं है कि बीजेपी जरा घबराई हुई है और बार बार वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि भाई नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो हो सकता है कि ये नारा जो है सबके समझ आ गया हो अभी आजमी साहब? देखिए, जब पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी पिछले साल जी, तो आपने डे वन से अगर देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी और देश में जो गोदी मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करता है जी, तो आप जब नजर डालेंगे तो पहले दिन से वो तमाम के तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा का न सिर्फ विरोध करते थे, बल्कि वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का मजाक भी उड़ाया। लोग ये बोलते थे कि राहुल गांधी जी को पहले अपनी पार्टी को जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, फिर उसके बाद उन्हें भारत जोड़ने का काम करना चाहिए, और बहुत भी अलग अलग तरीके से उसके खिलाफ बात की गई कि लोगों को पकड़ के लाया जाता है और पहले से उन्हें बुलाकर खड़ा किया जाए, ऐसे बहुत सारी बातें हुई। लेकिन न भारत जोड़ो यात्रा रुकी, न राहुल गांधी जी रुके, क्योंकि उसका संदेश अलग था। उसका संदेश ये था कि वो जो पूरे देश में जो माहौल बना है और जो नफरत का जो माहौल बना है, उस माहौल के खिलाफ बहुत सारे लोग जो है घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें जरूरत थी इस बात की कि कोई तो निकले, कोई तो आवाज उठाए, कोई तो इस पर कहे, कोई तो हमारे पास आए, और वो काम राहुल गांधी जी ने उस वक्त कर दिया। तो लोगों को ये लगा कि नहीं, कोई ऐसा भी है जो इस नफरत के खिलाफ बगैर हिंसा भड़काए, लड़ने की पूरी ताकत रखता है और उससे लड़कर ये हमारे तक आता है। लोगों को इस बात का भी पूरा अंदाजा था कि आसान नहीं है राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा कर लेना, बहुत सारी कठिनाइयां होंगी जो आम आदमी के समझ में नहीं आई, लेकिन इतना उन्हें समझ में आया कि कठिनाइयों से जूझता हुआ ये नेता जो है वो लोगों के बीच आ रहा है, तो वो तभी से घबराए हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि ये बातें, गुजरात का चुनाव आया तो
भारतीय जनता पार्टी ने जो की तरफ से जो पहला बयान आया वो यह आया कि गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई। भाई आप गुजरात का चुनाव जीते, आप तो पहले दिन से कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है, फिर आपने पहला ये बयान क्यों दिया कि भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई? इसका मतलब कि आपने भारत जोड़ो यात्रा को नजर में रखा था। और फिर अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटका में कामयाब हुई, राहुल गांधी जी जिन इलाकों से गुजरे थे वहां ज्यादातर इलाकों में सीटों पर कांग्रेस जीत गई, तो ये अब ये बयान दे रहे हैं कि इस जीत में भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। ये घबराए हुए, देखिए झूठ झूठ होता है। और आप कभी भी ये ध्यान रखिए कि अन्याय की उम्र बहुत छोटी होती है, अन्याय का अंत होता ही होता है, न्याय हमेशा जिंदा रहता है। आजमी साहब जेपी नड्डा साहब यहाँ पर थे। भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 शुरू होने जा रही है जी, उसको आगे किया जा, जो आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है अक्टूबर महीने से, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है। और आप देखना आने वाले दिनों में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडे भारतीय जनता पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी करेगी। सर आजमी साहब जेपी नड्डा जी यहाँ पर थे मुंबई में, उनका कहना था कि बीजेपी का मेयर होगा मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। आवाज आ रही है? you have to repeat the question. I don't think he can hear us. Yes. हेलो आजमी साहब सुन, you can hear me? हेलो हाँ आजमी साहब। आजमी साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो अरशद आजमी साहब आपको आवाज आ रही है क्या? Can you hear us, sir? I don't think he can hear us. We may have lost the audio. आजमी साहब can you hear us? हाँ या तो जेपी नड्डा जी बेचारे जेपी नड्डा जी बोले। आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो हाँ बिल्कुल जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? ओके जेपी नड्डा सेज दैट मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। आवाज आ रही है मेरी? यस बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, वेरी क्लियरली वी कैन हियर यू सर। जेपी नड्डा जी का कहना है कि बीजेपी में मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा जेपी नड्डा मुंबई मेयर बीजेपी। तो कैसे देखते हो? बोलते कि हाउ, बिकॉज आंकड़े सब आपके पास है, एमवीए 50% वोट शेयर से ऊपर वोट शेयर है। जेपी नड्डा जी मुंबई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं बेचारे। अब वो आए होंगे वहां से दिल्ली से, और दिल्ली से ये बात उन्हें आई थिंक वी आर बोल दीजिए कि मुंबई में होगा। जी जी Mr. Azmi, are you there, sir? All right, Mr. Azmi has been disconnected. Fine, we'll try and get back to him at some other point of time. Thank you very much, Mr. Arshad Azmi. So nice of you, sir. It was a lovely conversation, as long as it lasted. But as he said, Mr. J.P. Nadda does not seem to know much about Mumbai. Yes. मुंबई के बारे में जेपी नड्डा साहब ज्यादा नहीं जानते हैं, ऐसा अरशद आजमी साहब ने कहा। अच्छा, जी आजमी साहब, आजमी साहब जेपी नड्डा, मैं ये कह रहा था कि देखिए जेपी नड्डा जी जो हैं वो बहुत ज्यादा मुंबई शहर के बारे में जानते नहीं हैं जी, और मुंबई में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकार चल रही है शिंदे जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी वो बेचारे बहुत जानते नहीं है। उन्हें दिल्ली से कहा गया होगा कि आप जाकर इस तरह का बयान दे दीजिए। जैसे कि पहले भी आप देखिए उन्होंने, जब ये सरकार शिंदे जी की और इसकी सरकार बन रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तब नड्डा जी ने बयान दिया था कि हम शिंदे को बाहर से समर्थन देंगे जी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो सरकार में बैठ रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने बयान दिया इस बात का, लेकिन जो बम्बई के जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप की जो पार्टी, शिंदे ग्रुप जो शिवसेना है, वो दोनों मिलकर भी मैं आपको बताऊं कि वो मेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोगों की जो हालत जो इस मुंबई शहर में हुई है, और ये जो खास तौर से अब ये जो चुनाव धीरे धीरे चलता जा रहा है, इसका पूरा और पूरा आक्रोश जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही लोगों का है। आप देखिए मुंबई शहर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बीएमसी के मेयर के उस पर ये बोल दूं, 15 दिन के बाद मानसून आने का वक्त है, जून में बारिश शुरू हो जाएगी जी। आपने देखा मुंबई शहर के नालों की हालत क्या है जी। 226 करोड़ रुपए नालों की सफाई के ऊपर रखे गए हैं, इसमें मीठी नदी भी शामिल है। क्या है, आप अगर पूरे शहर में घूम कर देखेंगे तो उन नालों के बाहर जिनकी सफाई की जानी थी, थोड़े बड़े कचरे निकाल कर रख दिए गए हैं, कुछ लेबर हैं
एक लेबर का ठेकेदार वहां पर खड़ा होकर काम कराता है, ठेकेदार का सुपरवाइजर खड़ा होकर काम कराता है, न कोई अधिकारी विजिट कर रहा है, न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता विजिट कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं कि आज तो कारपोरेशन मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है। जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ने ये सर्कुलर निकाल दिया कि बगैर किसी वजह के, बगैर वजह जाने हुए किसी भी एक्स कॉर्पोरेटर को कारपोरेशन की बिल्डिंग के अंदर न आने दिया जाए। तो पूरे मुंबई शहर की जो हालात जो बना दिए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को असुविधा हो रही है, वो अधिकारी जो एक्स नगर सेवकों की नहीं सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है वो ये मुंबई शहर के आम नागरिक की बात को सुन रहे होंगे? आने वाले वक्त में ये 226 करोड़ रुपए पानी में किस तरह बह जाएंगे, इसका नजारा मुंबई शहर के लोगों को दिखाई देगा। और उसके बाद अगर चुनाव पहले भी इन्होंने करा दिया या उसके बाद भी ये चुनाव कराने के लिए राजी हो गए, तो आप देखिएगा बहुत बड़ी शिकस्त के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोग उसको देंगे। भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने की बात दूर है, अपनी पिछली सीटों को ही वो रिपीट कर जाए, उतनी ही रिटेन कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग कर्नाटका। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम सर। थैंक यू वेरी मच सर। Right, that was Mr. Azmi, and he's very articulate, very serious, very articulate, hardly ever smiles, hardly laughs. Right, and now we have our old friend from the UDDHAV THACKERAY-SHARAD, Mr. Lakshman Hake, I think. Lakshman Hake साहब, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भारत, जय शिवराय। लक्ष्मण हाके साहब, उद्धव ठाकरे जी ने तो अब पूरी कैंपेन शुरू कर दी है महाराष्ट्र में, मैंने सुना है। यस। हर गांव में, हर जगह पे, हर शाखा में, हर शाखा प्रमुख के पास फोन गया है, हर एक के साथ बातचीत हुई है। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी हर एक से बातचीत कर रहे हैं। सर, उसके बारे में जरा बताएंगे लोगों को प्लीज। आज महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे सम्मानीय संजय राउत जी और हमारे शिवसेना के उपनेता सुषमा अंधारे और बहुत सारे लीडर्स लोग आज बीड शहर में, जो महाराष्ट्र के मिडिवल एरिया है, वहां पे अभी शिवसेना की सभा चल रही है। जी। आज अभी का मैंने बोल दिया। और इस महाराष्ट्र में हर जगह पे, हर एरिया पे शिवसेना का छोटा मोटा कार्यक्रम चल रहा है। हम जनता में है, जनता के साथ है, और जनता की जो समस्याएं हैं उनके साथ शिवसेना ग्रास रूट पे काम कर रही है। जी। और सुनने में ये आया है कि काफी शाखा प्रमुख जिनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी शिंदे गुट के द्वारा, वो बहुत लोग उनमें से बड़े बहुमत से लोग वापस अपनी जगह पर वहीं आ गए हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ। जो लोग अमीश की वजह शिंदे ग्रुप के साथ गए थे और उधर जाने के बाद अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, और उधर जाने के बाद जो अमीशें मिली थी उनको, जितना भी उनको फंड्स देने के बारे में बोला था, काम करने के बारे में बोला था, उनको ऐसा कोई अमीशें दे दी थी, मगर वो फुलफिल नहीं हो रही है। और वो जनता में भी जा नहीं पा रहे हैं। जहां भी जाएंगे उनको कॉमन मैन बोल रहा है ये गद्दार का आदमी है, ये गद्दार लोगों के साथ गया है। वो चाहे काम भी नहीं कर पा रहा है और जनता में भी घूम नहीं पा रहा है। ऐसी कंफ्यूजन में वो लोग हैं, और वो लोग वापस आ रहे हैं बहुत बड़े पैगामे पे। और कोई पार्टी से शिवसेना उद्धव साहब के साथ ये लोग आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र का माहौल है आज का। जी, जबरदस्त, फैंटास्टिक। आके साहब, आज उद्धव जी स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए ने, इनवाइटेड थे, तो कैसे वहां मंच पर शरद पवार जी थे, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, ऑपोजिशन यूनिटी, एक ताकत सा वहां पर दिखाई दे रहा था कर्नाटका स्वेरिंग इन सेरेमनी में। सिद्धरामैया साहब हमारे शिवसेना के लीडर गए थे उधर, चाहे अनिल देसाई साहब गए थे मेरे इंफॉर्मेशन से, और हमारा प्रतिनिधि था उधर। तो इस संजय राउत जी जिस प्रकार त्र्यंबकेश्वर इशू में उठाया कि ये एसआईटी का जरूरत अभी क्यों पड़ा, रामनवमी में राइट जो हो गया उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था, यहां पर क्यों?
तो ये आज राज ठाकरे जी भी बोले कि वहां पर अगर कोई बरसों से कोई ट्रेडिशन चल रहा, उस ट्रेडिशन में बाहर के लोग आके न्यूसेंस क्रिएट करना चाहिए, रॉयल सा वातावरण नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग लोग, जितेंद्र अवार्ड जी ने उनको ही लेके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जो लोग उस चीज में इन्वॉल्व थे, मिन्स अंदर लेके जाने में। तो ये अलग अलग पार्टी का अलग अलग बयान, क्या लग रहा इश्यू त्र्यंबकेश्वर का? आगे साहब। साहब ये जो त्र्यंबकेश्वर में जो इश्यूज है ये नॉन इश्यूज है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पे इसको कोई हिंदुत्व के नाम पे माहौल बिगड़ने का प्रयास किया। गए 100 सालों से भी ज्यादा साल उधर के जो मुस्लिम जो दरगाह है वो लोग ये राजा त्र्यंबकेश्वर जो वो मंदिर है, मंदिर के सामने धूपारती करके आगे निकल जाते हैं। ये 100 सालों की परंपरा है। और मैं इन भाजपाई लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र के हर गांव में हिंदू लोग दरगाह की उरुस मतलब जुलूस उरुस जो यात्राएं हैं ये यात्राएं मनाते हैं। और मुस्लिम लोग हिंदू लोगों का जो ग्राम दैवत रहता है उस ग्राम दैवत की यात्रा में सहभाग लेते हैं। और ये भाईचारा का बहुत बड़ा प्रोग्राम सैकड़ों सालों से महाराष्ट्र में चलता आ रहा है। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो इश्यू बना दिया ये नॉन इश्यू था। ये दंगल करने के लिए और हिंदुओं का पोलराइजेशन करने का ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रयास था। ये महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने का प्रयास था। क्या ये इस वजह से था कि कर्नाटक में ये लोग हार गए? क्या इस वजह से क्या हो सकती है साहब? कर्नाटका में जो कांग्रेस को जो बहुत बड़ा विजय हासिल हुआ है उसका मैं एक कर्नाटक में एक वर्ड है, वो वर्ड कर्नाटक की इलेक्शन में बहुत पैगामे पे चला, बहुत मतलब उसकी जिक्र होता रहा कर्नाटक में। जो सिद्धरामैया है वो मास लीडर है और सिद्धरामैया ने एक फॉर्मूला उधर इस इलेक्शन में लाया था। वो फॉर्मूला था अहिंदा। कर्नाटका में बोलते हैं अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक, हिंदू, लिदावारू, दलितारू, ये 3 शब्दों का अहिंदा ये शब्द निकाला था। और अहिंदा की वजह से कर्नाटका में कांग्रेस जीती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मुसीबत है हारने के लिए। चाहे पोलराइजेशन हिंदुत्व के नाम पे करेगी उतना ज्यादा बाकी सब लोग इकट्ठा आएंगे। जैसा वो हिंदुत्व का इश्यू नॉन इश्यू क्रिएट करेंगे तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी हार मिलेगी। जेपी नड्डा साहब ने कहा कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। उस विषय में शिवसेना ने कहा कि जेपी नड्डा जी को मुंबई के और महाराष्ट्र के बारे में कुछ पता नहीं है। एमवीए का वोट शेयर 50 एक साथ अगर लड़ता है एमवीए तो 50% के ऊपर वोट शेयर जाता है, मगर अलग अलग लड़ेगा तो हके साहब एक चांस बन जाता है। क्या जेपी नड्डा इस चीज के बैंकिंग है कि आप लोग बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, उद्धव जी सेपरेट, कांग्रेस सेपरेट, एनसीपी सेपरेट? तो क्या कैसे देखते हो आप? बिकॉज अगर आप मैं जरतर पे बात नहीं विश्वास नहीं करता हूं, मगर मैं आपको एक बता देता हूं। अगर एमवीए महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ती है तो भी शिवसेना का मेयर होगा, और अलग अलग लड़ती है तो भी शिवसेना का मेयर होगा। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल देता हूं। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जेपी नड्डा साहब ने जिस कॉन्फिडेंस से अभी बोला है कि मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा, वो उन्होंने कैसे क्या हवा में बोल दिया या वैसे ही बोल दिया? क्या साहब ये क्या बात है? शिवसेना और मुंबई जी इनका बहुत दिनों से 25 इयर्स शिवसेना का कारपोरेटर, शिवसेना के हाथ में मुंबई है। मुंबई का जो काम है, मुंबई का जो फिक्स डिपॉजिट है, मुंबई का जो बहुत हजारों कोटि का प्रोग्राम चल रहा है, मुंबई का हर शिवसेना की शाखा से हर एक कॉमन मैन का काम करना, उनके सुख दुख में हिस्सा लेना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये जो पब्लिक के साथ कनेक्ट है वो शिवसेना जैसा, ठाकरे साहब जैसा और कोई पार्टी का मुंबई में है नहीं। और शिवसेना ये जो जादुई आंकड़ा है, ये 227 ये सीटें हैं मुंबई महानगर पालिका में, 227 में से शिवसेना अकेली 115-120 जगह जीत सकती है।
ऐसा माहौल हमारी शिवसेना की ऑफिस में, शिवसेना की कार्यालय में, शिवसेना भवन में अभी चल रहा है। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको बोल देता हूं कि शिवसेना मुंबई का महापौर, मेयर ये शिवसेना का होगा। फैंटास्टिक। प्रदीप जी। तो उद्धव ठाकरे जी का जो आलोचना जो शरद पवार, बिकॉज आज देव फडणवीस जी जब भी जहां भी जाते हैं शरद पवार के किताब को लेके जाते हैं, और शरद पवार के किताब से जो उद्धव जी के बारे में शरद पवार साहब ने बोला उस चीज को बार बार लोगों के सामने दोहराते हैं। उनको ये दिखाना चाहता है देव फडणवीस जी शायद कि उद्धव ठाकरे जी में वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। बार बार शरद पवार जी ने बोले कि संगठन फूट रहा, संगठन में विद्रोह हो रहा, उद्धव जी को पता नहीं है। आने वाले कल को कैसे हैंडल करना, आज आपको क्रिएट करना पड़ेगा सॉल्यूशंस, वो उद्धव जी नहीं किए। उद्धव जी तो ये चीज देवेंद्र फडणवीस जी बार बार पूरे महाराष्ट्र के दौरे में जहां जहां जाते हैं वहां शरद पवार जी के जो बयान है उसमें किताब से निकाल के लोगों को सुनाते हैं। तो इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप को ठेस पहुंचेगा? क्या वो लोगों के सामने इस प्रकार से दोहरा रहे कि ही इज नॉट गुड टू लीड, ही कैन नॉट बी द सीएम? कैसे देखते हो हाके साहब? साहब ये जो देवेंद्र फडणवीस है, ये देवेंद्र फडणवीस ये दोहरा नीति महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाजू को बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब के पास एमएलए नहीं रहे, उनके पास सिंबल नहीं रहा, उनके पास पार्टी नहीं रही, और एक बाजू को वो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी रहने दो, चाहे शिंदे ग्रुप रहने दो, ये सब लोग उनका एक कलमी कार्यक्रम है कि सम्माननीय उद्धव साहब की आलोचना करें, सम्माननीय आदित्य साहब की इमेज को डैमेज करें। मगर वो जितना ये प्रयास करेंगे उतनी महाराष्ट्र की जनता उनके अपोज में जाएगी। एक बाजू को बोलते हैं ये पार्टी खत्म हुई है, और दूसरी बाजू को एक कलमी कार्यक्रम में दोबारा मैं आपको बता देता हूं, एक कलमी कार्यक्रम है ठाकरे ठाकरे ठाकरे। कौन सा भी चैनल निकालो, चाहे हिंदी चैनल रहने दो, इंग्लिश चैनल रहने दो, मराठी चैनल रहने दो, हर बार एक ही प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब रहने दो, अमित शाह जी रहने दो, नरेंद्र मोदी जी रहने दो, चाहे देवेंद्र फडणवीस रहने दो, या चाहे मुंबई के वो शेलार, वो लाड़, ये इन लोगों का कोई दो कारपोरेटर चुन के लाने का उनका हैसियत नहीं, वो लोग भी सम्मान्य उद्धव साहब के ऊपर बोलते हैं। मगर महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का शिव सैनिक सम्मान्य उद्धव साहब के साथ खड़ा रहेगा। ये बार बार कहा जाता है लक्ष्मण हाके साहब, जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ बात की जाती है, ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे साहब ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ धोखा किया। बाला साहब ठाकरे जिनके साथ सारी उम्र लड़ते रहे, उन्हीं के साथ जाकर के इन्होंने हाथ मिलाया। मुख्यमंत्री पद के प्रलोभन की वजह से इन्होंने बाला साहब ठाकरे को धोखा दे दिया। लक्ष्मण हाके साहब, ये जो सम्माननीय बाला साहब ठाकरे और उनकी विचारधारा के बारे में ये जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए, ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर, ज्यादा से ज्यादा एमपी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी से स्थलांतर करते हुए भाजपा में आ गए हैं। उनको वॉशिंग मशीन में डाल के उनको बाहर निकाला है। और ये कैसी भाजपा को ये मॉरल मतलब नैतिक अधिकार है क्या शिवसेना पे शिवसेना की आलोचना करने का? कौन सी विचारधारा? भारतीय जनता पार्टी के एमपी कितने लोगों का नाम बता दूं मैं? 30-40 लीडर का नाम बता दूंगा कि जो कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुत्व का और महाराष्ट्र की जनता का, देश की जनता का कोई भी ताल्लुक आज बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुगाड़ू पार्टी बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता चाहती है। उधर पैसा जाने दो, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, उनको खींचो, उनको जेल में डालो, उनको हरेश करो और हमारे पार्टी में ले लो। पार्टी में आने के बाद उनकी जो इंक्वायरी बंद हो जाती है, ईडी का नोटिस बंद हो जाता है, सीबीआई का नोटिस बंद हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार है शिवसेना की आलोचना करने का? कौन सा हिंदुत्व? ये हमारा जो वंदनीय बाला साहब
वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने इस महाराष्ट्र को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। उनमें से 3 मुख्यमंत्री ठाकरे फैमिली के बाहर से है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, दूसरे मुख्यमंत्री नारायण राणे, तीसरा मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र बन चुका, वो भी उनको बनना नहीं था। उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि सन्मान्य उद्धव साहब को सीएम की शपथ लेनी पड़ी। और ये अभी के जो शिंदे है, वो भी शिवसेना का प्रोडक्ट है। तो मैं ये उद्धव ठाकरे साहब का हिंदुत्व का कोई ताल्लुक बचा नहीं है, उनके आइडियोलॉजी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ये सब महाराष्ट्र की जनता सब समझ चुकी है। हमारा महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र की कोई आइडियोलॉजी है, हमारे महाराष्ट्र के कोई इतिहास पुरुष है, हमारे महाराष्ट्र के फ्रीडम फाइटर है, हमारे महाराष्ट्र की सामान्य कॉमन लोगों की कोई समस्याएं है, और हमारी रीजनल पार्टी हमारे महाराष्ट्र की हित जो उपासना करने वाली पार्टी शिवसेना है, सन्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई भी ताल्लुक नहीं रहता कि ये शिवसेना ऐसी है वैसी है ऐसा बोलने का। आगे साहब, राज ठाकरे जी ने आज बीजेपी का बहुत आलोचना किया, बोले कि बीजेपी त्र्यंबकेश्वर से लेके उन्होंने ईडी के बाद में बात किया कि जिस प्रकार से ईडी का मिसयूज हो रहा है, लोगों को जबरदस्ती अंदर डाल रहा है, ये रिवेंज पॉलिटिक्स है, आप सत्ते में हमेशा रहोगे नहीं और दूसरे के सत्ता आने पर यही काम आप पे होने वाला जो आप आज कर रहे हो। तो राज ठाकरे जी हर लैंड स्कैम, उन्होंने बोले जो रत्नागिरी रिफाइनरी में बोले लैंड स्कैम है, फार्मर्स के गरीब फार्मर्स के लैंड खरीद कर वो हाई प्राइस में सरकार टेक ओवर करेगा। ये बाहर के लोग वहां पर टोटल प्रॉफिट ओरिएंटेड काम वहां पर कर रहे हैं। तो अलग अलग आलोचना जिस प्रकार से राज ठाकरे जी ने किए थे सरकार का, बीजेपी का, तो आपको लग रहा है कि एक पैरेलल उद्धव जी का पैरेलल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर उद्धव जी बीजेपी का आलोचना करते हैं, अब राज ठाकरे जी भी बीजेपी का आलोचना कर रहा है, तो क्या आपके वोटर्स में कुछ दरार पड़ जाएंगे, डिवाइड होगा वोट आने वाले चुनाव में जो बीएमसी है, स्टेट इलेक्शंस है? बिकॉज राज ठाकरे जी ने बोला कि हम सोलो लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे, स्वयं बल पे लड़ेंगे। इज इट गोइंग टू अफेक्ट सर? मुझे कोई ये शिवसेना की वोटों में बंटवारा ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है। बहुत दिनों से जैसे मनसे का ऐलान हुआ, मनसे इलेक्शन में आई है, उस दिन से ऐसा ही लॉजिक लगा जा रहा है, मगर ऐसा कोई हो नहीं पा रहा है। मैं राज साहब के बारे में एक सेंटेंस में आपको बता दूंगा। ये जो वो एक्टर है, एक्टर मतलब यशस्वी एक्टर है, मगर उनका जो मूवी है वो फेल मूवी है, इसीलिए उनका हमारी शिवसेना को कोई भी ऐतराज नहीं होगा और हमारे मतों में, हमारे वोटर्स में कोई भी बंटवारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये बताएं सर, चलते चलते लक्ष्मण आगे साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो अब क्या है कि वो मुख्य धारा से जरा ओझल हो गया। बीच में उसकी बहुत चर्चा हुई, अभी प्रदीप जी ने मेंशन किया कि बारसू में जो ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, उसका आगे क्या वास्तविकता में वो बन रही है ऑयल रिफाइनरी वहां पे, या उसको रोका जाएगा? क्योंकि लोग तो वहां के नहीं चाहते हैं साहब, वहां के जो हम लोगों को अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तो लोग तो ये कहते हैं कि हमारे कोंकण को कृपा करके जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, उसका सत्यानाश मत कीजिए सर। यस, ये कोंकण की जो जनता है, ये जनता इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट के अपोज में है जी। ये लोग बोलते हैं कि लाखों रोजगार आएंगे। इन लोगों को मेरा सवाल है कि ये लाखों छोड़ो, एक 5,000 बेरोजगार युवकों को भी नौकरी मिलेगी, ये 5,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। और इसके अंदर जो जमीनें जा रही है, ये जमीनें कई ठराविक लोगों ने, कई गिने चुने लोगों ने, उसमें ऑफिसर्स है, उनमें भाजपा के बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार है, इन लोगों ने ये जमीन खरीद कर रखी है। उनका सब 7/12 उनका यादी लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। इनके ऊपर इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग, उनकी लैंड और उनके कोई हित संबंध इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस महाराष्ट्र में और कोंकण की भूमि पे लाद रहे हैं, मतलब उनके ऊपर माथे पे डाल रहे हैं। मगर ये महाराष्ट्र की कोंकण की जनता इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कोकन में नहीं आने देंगे। क्योंकि लक्ष्मण आगे साहब, एक बार अगर रिफाइनरी वहां पर आ गई, वेरी फ्रैंकली, मैं तो बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ऑयल रिफाइनरी है साहब, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है, याद रख लीजिए। ये कोई कोई वो सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कि जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है साहब। वहां पे आपका समंदर भी प्रदूषित होगा, पूरी जमीन भी और प्रदूषित होगी, इसका हवा पानी जंगल सब जाएगा सर। सब जाएगा साहब, मगर मच्छीमार व्यवसाय जो है जी हमारे कोकन किनारे पे, खत्म इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला सर। है। इम्पैक्ट नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या इम्पैक्ट खत्म हो होगा? जाएगा। मैं बता देता हूँ, जो हमारा कोकन का जो रूरल एरिया में जो गरीब मच्छीमार है, जी वो समुद्र किनारे के नजदीक मच्छीमारी करता है, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। मगर जो गुजरात से, राजस्थान से जो मारवाड़ी है, वो बहुत बड़े 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 अत्याधुनिक नौकाएं लाते हैं, जी अत्याधुनिक करेक्ट। स्पीड बोट लाते हैं, वो समुद्र के बहुत आगे जाके वो मच्छीमारी करते हैं। मगर हमारे जो मच्छीमार है, हमारे जो रूरल एरिया के मच्छीमार है, वो समुद्र के किनारे से नजदीक कहने मच्छीमारी का करते मतलब ये हैं। हुआ लक्ष्मण आगे साहब, जो आज मुंबई का हाल है, जैसे प्रदीप भाई और मैंने वर्सोवा पे, जो वर्सोवा जेटी है वहाँ पर जो मच्छीमार कॉलोनी है, वहाँ पर एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और वो बताते हैं कि आगे 100 किलोमीटर भी जाएं आगे तब भी मछली नहीं मिलती है। ये हालत हो गई है, नहीं मिलती ये है। हालत हो गई है। और उसके आसपास का समंदर अगर आप देखें, वो इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है, वहां पे मछली तो छोड़िए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी वहां पर जिंदा नहीं रह सकता। वही हाल होने वाला है कोंकण का, मैं बराबर। सीधी बात बता दूं आपको। Yes, आगे agree. आगे सर ऐसा है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं भाई जनतंत्र राज्य है, वी आर अ डेमोक्रेसी, देश आपका है, सरकार आपकी है, आपकी मर्जी है क्या करना है, ये तो लोगों की मर्जी होती है ना। अब आगे लोग क्या करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। लक्ष्मण आगे बराबर है साहब। सर। ये देश हमारे महाराष्ट्र के लोगों के मन में ये अभी शंकाएं हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो अच्छे प्रोजेक्ट है, जहाँ पे रोजंदारी मिलती है, जी वो सब प्रोजेक्ट गुजरात को ये बीजेपी के लोग भगा के लेके गए, और जो प्रदूषण करने वाले हैं, हमारे रूरल एरिया के लोगों के जीवन मान में इम्पैक्ट करने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दे रहे हैं। और ये महाराष्ट्र की जनता, तरुण, ये जो नवयुवक है, वो सब समझ चुके हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण आगे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मजा आया आपसे बात करने में एज यूजुअल। धन्यवाद। इसी तरह बेबाक तरीके से आप बात करते रहें, सच बोलते रहें। भले ही आप उद्धव सेना में हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है आप हमेशा सच बोलते हैं, आप किसी बात को छुपाते नहीं हैं। सर मैं रूरल एरिया से आने वाला, एक गांव में घूमने वाला, हर दिन घूमने वाला, मेरा अगर सोशल मीडिया पे स्टेटस चेक करोगे तो मैं रूरल लोगों के साथ मेरा कनेक्ट है। और मैं छोटा आदमी हूँ, आप मुझे इतने बड़े स्क्रीन पे मुझे संधि दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लक्ष्मण हाके साहब अपनी हाइट की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण हाके साहब कह रहे हैं वो उनकी जो हाइट है वो जरा छोटी है, इनका जो असली कद है वो बहुत बड़ा है। लक्ष्मण हाके साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। जय शिवाजी। यस। I hope they do something about that, about the oil refinery. I mean, this is going to be terrible, because otherwise, really and truly speaking, the entire pristine nature of the environment in the Konkan is going to go. I don't know what we are doing. Very frankly speaking, what are we doing? Why would the Saudis want to come over here and have a refinery here? I mean, it begs the question, because the Saudis themselves are trying to convert the desert into farmland. In Saudi Arabia, naturally Aramco is looking for different areas to bring in all these polluting industries everywhere else. And as everybody says, Pradeep ji, on the one hand, Mr. Nitin Gadkari, our dear friend, wants everybody to switch over to electric vehicles. So why do you need an oil refinery? For what?
and he is very passionate about this. Yes, he as he says within मुक्त 5 करूंगा, अरे 5 साल के बाद बोला पेट्रोल- डीजल और पेट्रोल- पेट्रोल की गाड़ी दिखेगी नहीं। डीजल को मुक्त करूंगा भारत। अरे ये डीजल कांग्रेस और- मुक्त भारत और ये पेट्रोल मुक्त अरे भारत। प्रदीप जी, अगर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी अगले 5 और 6 साल के बीच में यहाँ दिखेगी नहीं तो फिर रिफाइनरी की आवश्यकता क्या है? वो पेट्रोल और डीजल किसके लिए है? मतलब सोचने वाली बात है, राइट? एंड देयर इज वन जेंटलमैन राइट नाउ विद अस, a wildlife photographer par excellence, Mr. Neeraj Chawla, who's very passionate about the environment. This man has seen the horrible impact of uncontrolled, untrammeled urbanization and industrialization on not just the birds but on the wildlife in general in and around Mumbai. Mr. Chawla, very good evening, sir. Hello Rajiv ji, good evening. How are you? How are you? नीरज साहब कैसे I'm हैं? very good. I'm very fine. Thank you so much. कैसे हैं साहब? कैसे हैं? वैसे मैं बिल्कुल एक्चुअली ठीक हूँ। ऐसे सर ऐसा है कि आपका नाम अगर टाइप करो गूगल पे जी हाँ। तो नीरज चावला तो लिखते ही हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा साहब आ जाते हैं वहाँ पे जो अपना बिल्कुल, जैवलिन बिल्कुल। लेकर के। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो नीरज साहब आप ये बताएं, अभी अभी हमारे साथ लक्ष्मण आगे साहब थे, वो भी बेचारे कोंकण के ही हैं और उद्धव ठाकरे जी की सेना के हैं, और वो बार बार मतलब यही चिल्ला रहे हैं कि यार यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी मत बनाओ, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी चले जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, you've been seeing bird nesting sites, you've been seeing, you know, you've seen how the flamingos come over here, you've seen how the Siberian terns have been coming over here to Mumbai, you've seen so much of birds flying in from all over the world, towards Mumbai, and you would have also seen how the bird numbers have declined. So Yes. what are we doing? क्या कर रहे हैं हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? चावला साहब बताएं। हाँ, ये this is a very very big question and concerning everybody. जी। We have a very big organization called Bombay Natural History Society, BNHS, yes, BNHS. Yes. It is working for last more than 100 years now. that's right, And it is rather providing the data to the government. yes, It is doing the scientific research and it is collecting the data and it is studying and on all aspects of nature and wildlife and environment. yes, But what is happening to this data? Where this data is going? in a file, The BNHS is supplying the data. yes, Scientists are working. But end result is what? That is a very big question. तो यहाँ पर सर मैं आपसे एक छोटी सी मतलब छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी हाँ। And once again, for the information of our viewers, we have the amazing wildlife photographer, especially specializing in birds, Neeraj Chawla साहब, who's also a fashion photographer and an architect by profession. ये भी आपको बता दें, सर डॉक्टर सलीम अली कहा करते थे, the famous ornithologist, कि यार बॉम्बे में, मुंबई में, उस वक्त तो खैर बॉम्बे था, कि यहाँ पर तो बर्ड्स तो रही नहीं, यू कैन ओनली सी क्रोज, सिर्फ कौवे दिखते हैं, क्योंकि दिस इज गार्बेज सिटी, मुंबई इज गार्बेज सिटी, जहां गार्बेज होगा वहां कौवे, चील, कौवे, गिद्ध, यही सब मिलेंगे आपको। मतलब as far as birds are concerned, you don't get to see too many birds anymore in Mumbai. Has the situation improved, sir, or has it deteriorated? Chawla sir. No, the situation has not improved at all. And let me tell you, these crows and vultures and all this what you are mentioning, Yes. they come in the category of scavengers. Yes. So where there is a garbage, the crow will be there. Yes. Absolutely. And you'll be surprised to know something. We have a Wildlife Act. It's a 1972 Act, Wildlife 1972 Act. Yes. And crow is the only bird. If we kill the crow, it is not punishable. Any other bird, if we kill, there is a punishment to that. But crow they have left. I don't know why. Crow is the only bird. If somebody is killing the crow, then it is not punishable offense. Which is very strange because अपने यहाँ तो हिंदुओं में तो कौवा जो होता है वो शनि का वाहन होता है, Yes. और आज वैसे भी शनि जयंती है और उसी दिन हम लोग बात कर रहे हैं, which is very strange. Sir, equality is one of the pillars of our constitution. Equality maintain हो यहाँ पर अभी which is very absolutely. सर आप ये बताएं कि आपको ये पहले कैसे मालूम पड़ा, कि अपने बारे में जरा बताएं
Do tell us a bit about yourself in terms Yeah, of when did you start? I will start from the start only. Please. Yeah, actually, I have a friend. They are photo printers. Yes. They do printing of photographs. Yes. I used to go to them. Now, this fellow was having a book, and the name of the book was An Eye for a Bird. Yes. I borrowed this book from him, and I started reading. It was about almost 22 years back. Right. This An Eye for a Bird is a book written by Eric Hosking, Yes. and it is a 1970 publication. And interestingly, I was so surprised when I was reading the book, An Eye for a Bird. I thought that you have to develop an eye for a bird, like whether you have an eye for a bird or no. But when I was reading the book, I came to know something very strange, very, very strange. This person, Eric Hosking, who has written the book, he used to sit on a machan with his wife and click photographs of the birds almost, in 1970 or probably 1940 maybe. Yes. And that time it was a film camera, and they have to use the flash gun and everything in the night time when you are sitting in the machan in the night. So he was clicking the owls. There was a nest of an owl and there were babies, and he was sitting with his wife and he was clicking the owls in the nest. So what happened while clicking, the owl came flying towards him Yes. and snatched his eye and went away. And that is the reason he has kept the name of his autobiography, An Eye for a Bird. Like he has donated one eye for a bird, Wow. that way. Wow. That is Eric Hosking. Right. So An Eye for a Bird. So when I Fantastic. read this book, I became very passionate about birding, and I started doing a lot of work in this field. We shifted to Charkop Kandivali in 1991. That time Charkop was a very different area. The mangroves were there, the coastal area, the Mahim Creek was very good that time. Now rampant development has totally ruined all the area. Now what has happened is, I started doing this photography right from 91 in this area, and I recorded about total 65 species here, 65 species of birds. 65 species of bird. Yes. And today if I go out and I start doing it, I cannot even count 23. So from 65, the count has come down to 23 Right. in almost 20-25 years. But I'll tell you what, the area where I live in and around Juhu, Yeah. 6-7 years ago, Yeah. one could not see any sparrows. Yes. But now suddenly I am seeing a proliferation of sparrows, which is, I think, a great thing, because the sparrows are an indicator of an environment which is perhaps healing itself. What do you think could be the reason? No, if the sparrows are around, Yes. it is an indicator of a healthy environment, no doubt about that. Right. I see them suddenly. They've suddenly come back in the last 2 years. No, but in which area? Not in the South Mumbai. I'm urban talking area. about Juhu. You're talking about Juhu. That's right. Okay. Not South Mumbai. South Mumbai, I have not seen any sparrows at all. Yeah, no sparrows at all. Yes. Because we have totally damaged their habitat. Yes. Because they need, and on top of it, there is a theory of this microwave towers, of mobile towers. Yes. Because when the nest is there and the eggs are there, they don't hatch because of this high frequency. Yes. That theory is also there. Right. And we are getting to see a lot of robins. We're getting to see a lot of red-breasted robins. We're getting to see a lot of miners, and quite a few other bird varieties. Suddenly, perhaps it could also be because maybe all the builders have stopped building because of lack of money, or perhaps something like that. No, it is not that. Yes. I'll tell you a very genuine reason for that. Yes. If you remember, 2 years back, we were all locked up in the houses in the time of Corona. That's right. And Corona was the time when all the human beings were inside the house. Nature got time to revive itself. Yes. Yes. And there was a lot of activity in wildlife. I never used to go out to areas where I normally go.
but I could see, because 2 years is a long time, Yes. you know, and birds also, because that is the effect of those 2 years. Now you are seeing the babies have grown and they are out and they are flying and all those things. Probably again what will happen due to too much of traffic, pollution, and We'll be back to square one and, again. and again it will go, you know, again Oh, there God. will be a decline. The mangroves are cut and all those things are there. Harishji, you know, Mithi River about 25 years back was a sight to see. Means, I used to go to the school in Kalina, Air India Modern School. So Yes. it was a beautiful sight, the river flowing. In fact, the airport was not fully developed. You had full lush Correct. greenery. The Mithi River flowing from the airport area and going through now BKC into and touching the Mahim. Now, you know, various kind of birds, beautiful sight. Can we ever get back that thing, considering the government is also keen on reviving the rivers? Where DEVENDRA is concerned, the Deputy CM, Mr. Modi coming saying that we need to have STPs and all these kind of things. Are we going to get that beautiful era back where you could find these flamingos and various kind of birds out there, reviving Mithi River, reviving all the 4 rivers of Mumbai? You think anything possible in that particular, because you seem to be having a lot of knowledge where environment is concerned. See, there are 2 points in this. Sorry, there are 2 points in this. We can definitely revive it. But people have to become aware of the environment and the birds. You know, they have to become little knowledgeable about it. Otherwise, it is not possible. So we have to educate ourselves in that field, and at the same time there has to be a full cooperation from the authorities. Otherwise, it is not possible. And as the population is increasing like anything in Mumbai, you know, and development is also going on. So it is very, very difficult. I don't see that thing, you know, getting revived like 1991. So could you tell us, when you started, you say you started 21 years ago, you Yeah. started going out with your camera and shooting and all that. Yeah. So A, tell us about your equipment, how it has evolved over the years, and B, Oh. also tell us about what you saw at that time and what do you see now. Mr. Chawla. Yeah. Okay. See, when I started, first time I picked up my camera, I was 20 years old. That was way back in 1982, Right. and it was a film time. You know, that time was the film days. Yes. So which Like camera we was used it? to load old cameras. We used to load film into the camera and click. It was a 36 roll. So which camera You was know, it, sir? It was Minolta. It was a Minolta. Okay. Yeah. And later on, I bought Olympus OM10. Yes. That was my favorite camera, The Olympus OM10. Olympus, Yeah, that is Olympus. that is a Canon, right? Olympus Canon? Yeah, Yes. no, Olympus. Olympus, yes. Yeah, Olympus OM10, that was the series. And I used to use 300 mm lens that time. Yes. And it was very difficult task because it was very expensive. The rolls, Yes. plus processing of it, then, you know, printing them to a size, make positives and all. It was a very, very expensive affair. And then later on, the digital camera started coming. That was, you know, almost in 90s, 95, 96, the digital camera started coming. Then it became very easy because you are clicking, you are deleting the photographs, what you don't need, and you are just keeping what you need. And slowly it improved. Now I am using Canon series. I have a Canon gear with me, and I'm using 400 mm lens with 1.4 extender. So it is Wow. almost like 600 mm. Fantastic. Yeah. Fantastic. So like, you know, we have a discussion with lots and lots of other photographers. Do you Yeah. also sometimes digitally enhance the pictures that you have taken or the film that you have taken, or do you print it like it is? There are two things to it. I mean, since there is a digital media available, the correction of the photographs are possible, but we don't correct it like the commercial studio pictures are done. Yes. We only correct it for the color. It is called color correction, because a different day, in the day, light is very different, you know. Yes. So what happens, you don't get the right plumage of the bird because of the light, because Yes. of the
daylight available. So to get the right color of the bird, we just do color correction. That much we do. Right. But No, we don't rectify the picture, or we don't. you mean you don't Photoshop it, you don't make we the don't bird Photoshop slimmer it or at all. fatter or bigger? No, because it is not required. Yes. It is not required. But they're already so Yeah. beautiful anyway. So Yeah. you don't need to add to it. It's not a human Yeah. subject. It is not as if it's a human model where you Yes. need to give her a sharper nose or a longer Correct. face. Yeah. Correct. Absolutely. Absolutely. Now over here, and what have you through your lens, you've been shooting for the last 21 years, what have you seen now over the years? How has the environment in which you've been shooting, how has it evolved? How has it become different? Could you tell us that, please? Yeah. See, environment has definitely become very different with respect to pollution, with respect to heat, with respect to decline of birds, and when I go to Mumbai, some areas I used to go earlier, about 20 years back, they used to be so beautiful as you narrated earlier. Yes. Now wherever I go, it is just garbage. There is a pond nearby my house, so people are just throwing garbage into that. Where do you stay, sir? I am at Charkop, Kandivali West. Charkop, Kandivali West. And Yeah. and the pond is being used To for throw the garbage disposal. Yes, I mean, that was what all water bodies were actually being used all over Mumbai earlier. Isn't And that Yeah. we could. See, just I'll tell divide you some. something. I'll tell you something very interesting. There is people are not even aware of certain things. Like there is a Ramsar. What they say Ramsar Convention. Yes. And it started in 1971, Yes. and it is all concerned with water bodies. That's right. That is, you have to protect your water bodies, and you have to keep them clean and all those things. As you narrated earlier, there used to be a river going through the Mumbai, Yes. and it has disappeared totally. You go to Melbourne, you go to Australia, Melbourne, the river Yarra is, going right from the center of the city for last 100 years, and you can simply go and drink the water. It is that clean. So forget about Melbourne. Forget about Melbourne. Let me tell you about Tehran. Yeah. In the city center, from the Muhammad mountain, there are two streams which flow on both sides of the main Broadway, as it is called. And the water is so clean, Correct. If my point is, if the Iranians can keep that water clean, why can't we? Yeah. What is the matter with us? Why do It we is. have to piss and shit Yes. in clean flowing river? Why do we have to do that? What kind of people are we anyway? Mr. Chavla, could you tell us please why? You've seen it happen. Why? Yeah, it is basically, see, as I said, the education, the same Indian we are spitting on the roads and we are throwing garbage in the ponds, rivers, the same person when we are going abroad, we become totally straight, I don't know how and why, Yes. that Sir, kind हम of तो- mentality. सर हम तो नदियों की पूजा करते हैं सर. Yes. ये पूजा होती है उसमें हमारी. फिर वो फूल भी फेंकते हैं, फिर उसके अंदर वो पूजा का सामान भी फेंकते हैं, वो अलग बात है. But then the stagnant water Yes. where it doesn't have any way to go out, and we are throwing garbage into it, and one day it will get filled totally. Yes. And then you know how Mumbai is working with land sharks and other issues are there. And So- then, so very and then you shortly- cover it, and then you cover the collector spends a lot of money to cover it with all kind of debris, and then you spend hundreds of crores to recover the pond. That is what we saw one of the ponds in Kalina which we fought for. The collector gave orders that because people are throwing garbage into the pond, cover it. So they covered the pond, and after the villagers and all got together and fought for it, another order was passed, a special fund was allotted, cleared, and another few crores was spent to revive the pond, and that's what's happening everywhere. So this is how things are. It is nexus between so many authorities and builders and other things. Lot of issues are there. So are you I mean, hopeful that things will turn around? Do you think things might turn around?
Only if we have unity, only if we become aware of it, if we educate our children in that direction, then it is possible. One thing I am hopeful that today if I go to national park, children have become quite aware. They don't throw the plastic on the, earlier, uh, you know, 10, 15 years back, if you go to national park, people used to just throw plastic from the jeep, on the road, and there is nobody to pick up. And that plastic is, either taken by the bird or the animal, then there is a problem. Like, for example, chewing gum. Chewing gum is such a small thing. But when the bird is, because bird doesn't know it is a chewing gum. So when the bird is trying to eat it, the beak becomes, beak becomes, Yes, it is the, sticky. the beak sticks to each So other. Yes, that's it right. stick to each other, then they can't open it. That's right. Yeah, so So, it's so such a Mr. small Chawla, Neeraj Chawla साहब ये बताएं, tell us a bit about your own favorite birds. Which are Sorry? your favorites? I'm sure you must be having them. I'm sure you love all birds. But do tell Yeah, us, yeah, yeah. which, Yeah. which are your favorite birds to shoot? I think if you look at my shirt, Yes, there are birds, yes, and these are flamingos. right. And maximum I have shot flamingos only. And right now I'm wearing this shirt where flamingos are printed. So did you get that shirt made yourself? Did you have the print done No, yourself or what? I just happened to get it from Park Avenue, Raymond, Right, and I was very happy when I looked at this shirt. right. Gautam Singhania, you've done a very good job. Keep printing those flamingo shirts. But apart Yeah. from that, what about the Indian variety? ये तो flamingo के तो वो तो बाहर से आते हैं ना sir? नहीं, बाहर से नहीं आते हैं. Flamingos are breeding in Kutch. Yes. Okay. People have this notion that these are foreign birds. These are not foreign birds. No doubt, they started from Africa, Yes. but they have spread all over the world. The Indian flamingos, which are there, they are breeding in Kutch, in Nal Sarovar. There is a place called Nal Sarovar. It is about 120 kilometers from Ahmedabad. So apart from flamingos, what else? Whoa, some bird variety which is indigenous to Mumbai. Yes, Are you golden sure? oriole is there. Oh Golden yes, oriole. the golden Yes, oriole. golden oriole is there, and it is very common. The birds which you see on the screen, Yes. this particular bird you see on the screen, it is called Saras, Yes, and this is the tallest bird of India. yes. Tallest bird of India. And what about And, this one? What about this one here, which we are seeing right now? This one is called. This one is a fantail. Oh, that is a fantail. All right, Yeah, that does it's a it. fantail. This of course Yeah, is the this one is Saras Saras. crane. Yeah, Right. Saras crane. Yes. So- So Saras crane, I was so lucky to get this shot when the pair gets together and they call in union, they call it, they make a call, and the call is so loud that even at a distance of 1 kilometer you can hear it. Wow, lovely. Yeah. So how long do you spend every day in just shooting, in pursuing your favorite hobby? Is there a living in it, or what do you do? No, not really. I like once in 1 month or 2 months I go out, and for about a week's time I go to national parks and I click pictures. I visit a lot of national parks around. And India, in fact, India has got 106 national parks now. How many have you visited? I have not even visited about 20. And So- you'll be surprised to know that in last 25 years, see, India has got about 1280 species of birds. Yes. Almost 1280 species of birds. 6% of the world birds we have in India. Let's try and preserve them. Let's Yeah, try and protect yeah. them. Protect them. That is one part. And in 25 years, I have just not even covered 360 birds. And Out have of you 1280. have you been to Bharatpur? I'm sure you Yes, must have. I've been to Bharatpur is my second home, you can say. Wonderful. So what's the difference between, say, the Sanjay Gandhi National Park and the Bharatpur Sanctuary? No, there is a big difference. There is a very big difference. See, Sanjay Gandhi National Park is a created place. It's not a. It is natural. No doubt, it is natural.
but the lake inside, which is there is a lake inside, Yes. which is the artificial lake, which is not the natural lake. 100 years back, a British engineer did it to cater the water to Mumbai. There are total 3 lakes if you see in Mumbai. Powai Lake used to be there, I mean it is still there, but we don't drink water from Powai Lake. And then there are 2 more lakes inside. So this is the artificial lake. The and to Boisar protect- Lake and the Tulsi Vihar Lake, yes. Please. Tulsi Vihar Lake. So what happens is that to protect the lake, a national park is created. So it is not a wild national park as like Bandhavgarh or Kana, and these places are away from cities. They are not inside the city. The peculiarity about this national park is, Sanjay Gandhi National Park is, it is heart in the city now. Yes. And this is what we say, it is a lung of the city. Because of that only we are able to breathe. Right. So your favorite place, as you said, is Bharatpur, which you call your Yes. second home. Yeah, And the varieties of birds that come there, yeah. have they remained the same, or are they also deteriorating? Absolutely, they have deteriorated like anything. I'll tell you, I did not get a chance to click. This bird used to come earlier, Siberian crane. Yes. A bird used to come, Siberian crane from Siberia, because when Siberia is like below -40 degrees, the cranes used to come to Bharatpur, because Bharatpur used to cater them the right habitat, absolutely right habitat, a wetland, all those things, rainwater. Now what has happened, a lot of dams have been created and the rainwater has been collected in the dams, and the water is not left in the Bharatpur wetland area. So Siberian crane has stopped coming. That used to be the Isn't that attraction. a tragedy? Because that used to be the biggest attraction of Bharatpur. Yes, that Everybody was used to the wait for biggest the attraction. Siberian cranes to come. Yes. And if they've stopped coming, that is terrible. And that's that just is terrible. and that I think should be an indicator of the other things to come. Because in Mumbai, as Mr. Chawla already said, all you can smell, all you can see everywhere, where there used to be wetlands, where there used to be mangroves, where there used to be water bodies, all you can see is garbage. And where there's garbage, there'll be crows. There won't be other birds. There will be crows, however. There will be vultures, there'll be crows, and, well, sometimes there'll be seagulls as well, which is also, by the way, a carrion bird. But, Mr. Chawla, thank you very much for joining us. So nice of you, sir. Lovely Yes, to have I'm this talk thankful with to you. Lovely I'm to have this thankful to talk with you. you. It's really and truly wonderful. It's really my pleasure. Thank you very much. Wonderful so to have much, you sir. with us. And one of these days, perhaps you could join us here in our studio, where we could also take a look at your collection. Or perhaps That would we be could- my real pleasure. That'd be I really will lovely. definitely visit. That'll be Thank you really so and truly much. lovely. Thank you very much. Thank you so much. Mr. Namaste. Neeraj Chawla, namaskar, Vande Mataram, sir. And I hope to God, the birds, which are a real indication of what's happening to the environment, I hope they're sending us a message saying, wake up, otherwise you'll be faced with disaster. If we Absolutely. don't, well, as they say, क्या बोलते हैं उसको सर? जिंदगी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, आगे तुम्हारे ऊपर है, ऊपर जाना है या क्या करना है? And as well, My tagline, Chawla my ji, tagline is there. I call it save nature, save self. If you save nature, you will be able to save yourself. Otherwise, no. That's right. and to fulfill your hobby, one life is not enough. One life is not enough. Yes. Absolutely. You need many, many lives. And may you have many, many lives, Mr. Chawla. Thank you very much. Thank you so much, sir. Wonderful. Really wonderful talking to you. And that was fantastic. That was really and truly fantastic. Right. That is just about it as far as we are concerned for tonight's show. Mr. Neeraj Chawla, wildlife photographer, actually a bird photographer more than anything else. And look at what he has to say. Pradeep ji, it's I mean, everybody's concerned about the environment because everything starts and begins from there. If you have a good environment, everything survives, life is there, food is there, you breathe the fresh air, everything helps you. But if you destroy the environment,
everything gets destroyed on its own. All right. All I'm saying is that, I mean, this would be something which would be very familiar to you. What he said about that pond in Charkop. Yes. As you said very clearly, Kalina Talao. You saw the same thing and you fought for it. We fought You for it. fought for it like anything. We fought and, for and, and you were able to actually revive it. Yes, yes. And now I hope they remove the concretization that they have done all around the Talao. In fact, you know, after the program, Stalin Dayanand has been connecting with me, saying that you send a mail to this particular. So, because you need to revive it, and as you said, rightly said, if you need to revive it, the concretized ground has to be, you know, that has to go. Free. That has to go, because otherwise, how will the talao replenish itself? Exactly. अगर नीचे आपने कंक्रीट बना दिया, स्विमिंग पूल नहीं है साहब. तालाब जो होता है वो स्विमिंग पूल नहीं होता है. This is a talao. You want the underground aquifers to get recharged so that they can keep recharging the water above. और वो तब नहीं हो सकता अगर नीचे भी आपने कंक्रीट का फ्लोर बना दिया है. Now, I hope they do, but I think you've been doing It's a long story, sir. I mean, you need to have strict implementation of laws that you say, agar any water body is God, then you need to have strict laws to enforce that people don't defile it. Absolutely. Right, let's take a look at some of the comments which have come. आपके काफी कुछ comments भी आए हैं. Let's take a look at what we've got over here today. देखते हैं. Can we have them on, please? Absolutely true. BJP does not depend only on one election. BJP is a party which, as Pradeep ji is very fond of saying, is on election mode 24/7. South India is free from BJP. Next is Central India. Soon it'll be from Northeast India. Very, very shortly by 2030. Rajendra Prasad Saab, 2030. Isn't that something which we read yesterday? I think I read that yesterday. Great explanation by Mr. Abhyankar ji. Absolutely true. Can we move on, please? Avinash Abhyankar साहब of the MNS. आगे चलिए साहब. Raj Thackeray is a great personality. Have guts to say right to right, wrong to wrong. That's what he says. The next one, please. Why do I seem to think I read them yesterday? Not this one, of course. Jai Maharashtra, Jai Manse. Wonderful. Deepak Kudarkar, that's what he says. And I tell you what, the Maharashtra Navnirman Sena is really regaining its popularity, I think. ED के नोटिस के बाद राज ठाकरे भाजपा समर्थक हो गए. For your information, Mr. Kulkarni, Mr. Raj Thackeray has just attacked the Bharatiya Janata Party. So I don't know what you're talking about. Let's move forward, please. All the best, Rahul Gandhi, for the Bharat Jodo Yatra. That is Babu Samuel Selvaraj. Yes. That's it. That's all we've got. And Pradeep ji, जहाँ तक के राहुल गांधी जी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोग बहुत प्रोत्साहित हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं. प्रोत्साहित तो बाद में होंगे, उत्साहित हैं बहुत. ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा has really and truly, caught the imagination. So the grand old party with great leaders, great founding leaders, it'd be a shame if it just evaporated with no fight. Well, thankfully, and Rahul Gandhi reviving. It's there all across the country. All you need is a strong leadership with plans, as you say, 365 days, 24/7, yes. Actions right to the board level, right to the booth level, and then you revive the party. And it's a huge party. It's like a dinosaur just sleeping. That's you right. just need to awaken it with the right programs. So have they woken up with the Karnataka victory, or is that We just hope, a flash in we the hope pan? it's good for democracy and good for democratic principles in India that Because- Modi has a strong opposition. क्योंकि प्रदीप जी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कभी सोती नहीं है. भारतीय जनता पार्टी सब दिन, हफ्ते के 7 दिन, 24 घंटे, 365 दिन साल के जागती है और काम करती रहती है. उसके सामने आपको अगर लड़ना है तो आपको भी अपने तरीके से वैसे ही काम करना पड़ेगा. Sir, you have to redefine pyar and mohabbat. When it comes to the nation, when it comes to general elections, national security, nationalism, development, appeasement of all. I mean, these principles have been dug by Mr. Modi very deep.
As you say, just pure and equality for mohabbat. all, Yes. appeasement of none, equality for all. That's what he Exactly. said. You need to protect your borders. You need to show your strength. You need to flex your muscles. You need to protect the dignity of all the people. And the Congress has a very good pedigree, Pradeep ji. If you look Bilkul. at it, it is only Mrs. Indira Gandhi who actually won Yes. the biggest victory that India has ever had Exactly. in the 1971 war. I don't know why they don't refer to it more often. Rightfully speaking, they should use that as an example of what the Congress is with regard to national security. Suddenly, the Congress seems to be very weak when it comes to national security. I don't really know why. But then, that's for the Congress to decide. As you know, the Congress has very expensive, very well-paid consultants all over, and nobody gives us a single penny. So, I'm not going to give you free advice. That's just about it as far as Nation Now is concerned. आज के Nation Now में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मैं यहीं पर कल होंगे आपके साथ. तब तक आप अपने कमेंट जरूर भेजते रहें. Please do keep sending in your comments. Make them as colorful as possible. I don't care. I'd love it, and we will read it out right here from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.